This is an introductory video for those students who are moving from 10th to 11th standard. Those who want to pursue their careers in science side. So this is a common topic which will be useful in maths as well as physics. So if you are having dilemma whether to pursue your career in A group or in B group, A group mainly stands for the technical line where maths is compulsory and you learn maths in much in detail, and B group stands for the medical line where biology is compulsory. There is one again third group is also there. The option is of AB group where maths and biology you can take together, but you have to learn both the subjects along with the physics and chemistry. So we are starting with a common topic, that is trigonometry, which you have already learned in 10th standard. But before starting in the depth, we are taking the primary information of trigonometry. You have learned the trigonometry in which type of triangle? Right angle triangle. Very first thing, what is a right angle triangle? So we say in a right angle triangle is a triangle in which one angle is 90 degree. So the 90 degree angle, always this is the symbol. In right angle triangle, the side opposite to right angle. So you can see this is the side opposite to the right angle. This is compulsory hypotenuse. And there is one side opposite and one side adjacent. Now which is opposite and which is adjacent is not fixed every time. It depends upon the question. If I take this particular angle as our reference angle, the side opposite to the reference angle is opposite and the remaining one is your adjacent. Similarly, if I take a right angle triangle like this, again this is a right angle, hypotenuse is fixed. But if I take reference angle this one, so the side opposite to this one, this reference angle is opposite and the remaining one is adjacent. So hypotenuse is every time fixed, but adjacent and opposite varies according to the question. This is the one basic thing. Second thing, you have learned that what is the value of sine theta. Sine theta is always opposite upon hypo. Second thing, cos theta is adjacent upon hypo. Then tan theta. What is tan theta? Tan theta is sine theta upon cos theta. The value is opposite, hypo cancels, so opposite upon adjacent. Cot theta, you can write down cos theta upon sin theta, or you may write down 1 upon tan theta. The value is adjacent, hypo again cancel, adjacent upon opposite. Sec theta. Sec theta is 1 upon cos theta. So the value is reciprocal of the cos theta. The reciprocal of the cos theta is hypo upon adjacent. Then cosec theta. It is 1 upon sin theta. So reciprocal of sin theta. The value of sin theta if you learn, then it is hypo upon opposite. Now one thing to remember, tan theta, the basic confusion for some of the student is whether it is sin upon cos or cot is sin upon cos. How you will remember? Cot theta is cos. So C, always C comes in the front. So for cot theta, cos remain in the numerator. Uska ulta tan mein. Okay. So this 6 formulas you might have already learned. Now let us see the 3 basic formulas. The 3 basic formula, first one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Do you remember? Sin square theta. What about the theta? It can be angle, any angle, but it should be same. If I write down 5x, here also it should be 5x. Then the answer is 1. Sin square plus cos square is 1. The second thing, if you divide this equation, this is your equation number, I will get this is your main equation. And I am giving number 1. So if you divide equation number 1 with sin square theta, how it happens? Sin square theta divided by sin square theta plus cos square theta divided by sin square theta. Each and every term of the equation should be divided by sin square only. So 1 upon sin square theta. So what you will get? You will get sin square upon sin square is 1 plus cos upon sin.
This is cos square upon sin square. So we can write down cos upon sin. So the cos upon sin, what you are having, cos upon sin is cot. So it is 1 plus cot square theta is equal to 1 upon sin square theta. Now what about 1 upon sin? 1 upon sin is cosec square theta. So this is the second equation, basic equation, which you might have learned. Similarly, the first equation again, if you are dividing by cos square theta, what was your basic equation? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now I am dividing by, one time we have divided by sin, next time we are dividing by cos. So it is cos square theta, cos square theta, cos square theta. Now what you will get? Sin square upon cos square. So it is sin upon cos. Now sin upon cos क्या होगा? 10. अगर ऊपर c होगा तो ही cot, अगर ऊपर s होगा तो 10. So it will be 10 square theta plus ऊपर नीचे कट हो जाएगा. So you will get 1 is equal to 1 upon cos is sec square theta. So this is the third basic equation which you have already learned. So one equation, second equation, third equation. These are the primary conditions. These are the primary equations which you have already learned in the 10th standard. I am just revising for you. The next thing, now how to prepare the basic table of the values of 0 degree, 30, 45, 60, 90. So remember, we have to start with sin theta. So write down 0, 1, 2, 3, 4. Very easy. 0, 1, 2, 3, 4. Now divide all the numbers by 4. Divide all the given numbers by 4. Now take the square root of it. So I am taking square root of it. Here 0 upon anything is 0. Now the square root of 1 is 1 and the square root of 4 is 2. So the value is 1 upon 2. Here you can cancel it and it will be 1 square root is 1 and 2 square root is not available. So we will write down square root 2. The square root of 3 is square root 3 and the square root of 4 is 2. Here the numbers cancel and you remain, the number remain is 1. The square root of 1 is 1. So this is the prime step in writing the values. So sin theta is equal to this. If you can remember, it's well and good. Otherwise, this is the method how you can prepare it in the rough notebook on the back side of the notebook. Now what is the cos? It is the reverse of the sin. So we will start from here. 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0. So sin and cos, they are just reverse of each other. Now what you do? The 10. What is 10? You know already. 10 is sin upon cos. So it is sin, the value of sin divided by the value of cos. It is 0 upon 1 is 0 upon anything is 0. 2 cancels, 1 upon root 3. Value is 1. 2 cancels, value is root 3. 1 upon 0. When any number is divided by 0, the value is undefined, infinity. It is undefined. And the 10 and cot, they are reciprocal of each other. So reverse the order. Infinity, root 3, 1, 1 upon root 3 and 0. Now sec theta. What is sec? 1 upon cos. So here is the value of cos, reciprocal of it. The reciprocal of 1 is 1. The reciprocal is 2 upon root 3. The reciprocal is root 2 upon 1. No need to write. The reciprocal is 2 upon 1. So 2 upon 1, no need to write. And here 0. When 0 is there, you can write down 0 upon 1. So the reciprocal is 1 upon 0. 1 upon 0 means infinity. Reciprocal sec and cosec, they are reciprocal of each other. So it is infinity, 2, root 2, 2 upon root 3 and 1. Up to here, everybody must have learned only. Now, what is the thing why we should proceed further? When you have learned all this trigonometry in 10th standard, what is the base for learning going in the much detail? So here you can see
the value of sine or value of any trigonometric function which is available to you is ranging from 0 to 90. If I will ask you, what is the value of sine 180? How can you tell? There is no information available to you. Similarly, if I ask sec theta 270, can you tell me the value of sec theta 270? No, because the maximum value which you are having is 90. So when we are going in detail, we are taking angle beyond 90 degree. Now we are from right angle triangle, we are proceeding towards the plane in unit circle in 11th standard. So what is a unit circle? In the video we'll take it up in later on. But here the one main thing, when you upgrade your knowledge, the data is also upgraded. As you have learned when you were in second standard, you were wearing school uniform half pant. Now when the standard is upgraded, it is not mentioned that you have to wear the full pant, but the dress code, when you go to the school, their dress code is full pant and shirt. So similarly, up till now in the lower standard, you have learned angle in degree measure. These are the degree measure. So up to 10th standard, you learn trigonometry in degree measure, but when we proceed in 11th standard, we coming in the trigonometry in the radian measure. Now degree and radian. The relation between degree and radian is pi, which up till now you were saying 22 upon 7 or 3.14. But pi is the radian measure. For that, degree measure is 180. So for 180 degree, you can write down pi. Now onwards, when you learn trigonometry, it will be in the terms of the pi only. So let us look to that table once again. With reference to this conversion, that 180 degree is equal to pi. What is the value of 0? 0 only. What is the value of 30? It is pi by 6. Pi means 180 divided by 6. कितना आएगा? 30 only. Similarly, if I write down pi by 4, 180 divided by 4, you will get 45 only. So 45 now you will identify as pi by 4. 60 means pi by 3. Pi by 3 means 180 divided by 3. 180 divided by 3, you will get 60 only. So 60, now onwards you will remember as pi by 3. 90 means pi by 2. 180 divided by 2, you will get pi by 2 only. So the now new values for radian measure, 0 means 0, 30 means pi by 6, 45 means pi by 4, 60 means pi by 3, 90 means pi by 2. So these are the new radian measure for you. To understand the depth of the trigonometry, we are considering with the graph. So in 9th standard also you have drawn the graph. So this was when you draw x-axis, y-axis, this is your first quadrant. Where is the second quadrant? Here or here? So anywhere I can write down. I may write down here, I may write down here. But you remember we used to write down second quadrant here only. So sometimes a question may have arisen in your mind that why the second quadrant is this one only? Why this is not there? I am rotating like this. I may rotate like this also. No. But this is the first rule of the trigonometry that you have to rotate like this. This is what clockwise or anti-clockwise. You can see from 12 to you will come to 12 to 9. मतलब घड़ी से उल्टा चल रहे हो. So anti-clockwise. For that reason we were having first quadrant. First के बाद में यहाँ पे second quadrant आया. फिर और आगे जाएंगे तो ये third quadrant आया. और आगे जाएंगे तो ये fourth quadrant आया. आप इसको रिवर्स में ऑर्डर कभी दे ही नहीं सकते. For that reason we were giving this as second quadrant. आपने कभी पूछा आपके टीचर्स को या फ्रेंड्स को कि क्यों ये सेकंड होता है, ये सेकंड नहीं होता है? This is the reason why we are taking like this is in this anti-clockwise order only. This is first quadrant, second, third and fourth. Now we are proceeding our trigonometry as I said on unit circle. Now instead of right angle triangle, you are having unit circle. Now what is unit circle? The unit circle is a circle whose center is origin. Do you know what is the origin? Where x-axis and where y-axis meet.
that point is known as origin and the value is 0, 0. So its center is origin and having radius as 1 unit. I say unit, not centimeter. So it can be anything. Unit means I may take 1 kilometer as my 1 unit. So I have drawn a circle which is having radius 1. So this is radius. Again this is radius, this is radius, this is radius. You can see. So now I have to start from here every time and I have to proceed in which direction as discussed earlier, anti-clockwise only. अगर आपको प्लस मतलब आगे जाना है, आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, आपका स्पीड प्लस और माइनस करते हैं, प्लस करते हैं तो आपकी गाड़ी आगे जाती है, माइनस करते हैं तो ब्रेक लग जाती है. तो जब आप प्लस करेंगे तो इस साइड रोटेट करना है ऐसे. एंड व्हेन इट इज माइनस, जब ये माइनस होता है तो ये ऐसे होगा. ऐसे मतलब यहाँ पे क्या बचता है, 3 से 6. सो इट इज क्लॉकवाइज. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन इट इज प्लस इट इज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टा. व्हेन इट इज माइनस इट इज क्लॉकवाइज. नाउ आई एम स्टैंडिंग, यू कैन कंसिडर दिस टू बी द सर्कुलर पाथ. आपका एक गार्डन है, उसके ऊपर वॉकिंग, आपका जो होता है वे बना होता है वॉकिंग पाथ, ऐसा एक सर्कुलर वॉकिंग पाथ है. मैंने आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया एंड इफ आई आस्क यू टू वॉक, तो यहां से आप यहाँ पे गए. हाउ मच यू हैव मूव्ड, 90 डिग्री. आप और आगे जाओगे तो हाउ मच यू हैव मूव्ड, क्योंकि व्हेन यू कम फ्रॉम वन एक्सिस टू अनदर एक्सिस, द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यू टेक अ 90 डिग्री रोटेशन. अब आप यहां से यहाँ पे आए तो हाउ मच इज द रोटेशन टोटल ऑलवेज द रोटेशन इज काउंटेड फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस. तो रेफरेंस पॉइंट तो ये है आपका, यहां से आप यहाँ पे आ गए. सो इट इज 180 पे से आप आगे गए तो इट इज 270. अब ये कैसे 90 ऐड करने का, फटाफट. सो इट इज वेरी इजियर. आप 100 ऐड कर दो और उसमें से 10 माइनस कर दो. 0 था, 0 प्लस 100 तो 100 होगा, तो माइनस 10 किया तो 90. 90 में 100 प्लस करेंगे तो 190, माइनस 10 कर देने का तो 180 हो गया. 180 में 100 प्लस करेंगे तो 280, माइनस 10 तो 270. अब 270 से नाउ यूर रोटेटिंग लाइक दिस, वापस यहाँ पे आ गए तो 370, तो ये हो गया 360. लेकिन ये पाथ में कोई बीच में हर्डल तो है ही नहीं, आपका पूरा पाथ सर्कुलर ही है और बीच में कोई गेट नहीं है. आप फिर से एक बार आप स्टार्ट कर सकते हो आगे जाने का. आप यहाँ पे आपने एक चक्कर काट लिया एंड यू आर प्रोसीडिंग फर्दर. आप यहाँ से दूसरा चक्कर शुरू कर दिया तो 360 के बाद में और 90 डिग्री आपने रोटेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, और 90 डिग्री रोटेट करोगे तो 360 के बाद में 460, 10 माइनस करने का है तो 450 से फिर आपने और एक 90 डिग्री ले लिया तो 550, लेकिन आप लिखोगे 540 10 माइनस करके. फिर आपने एक और ले लिया तो 640, तो 630 हो जाएगा और यहाँ पे तो 720. फिलहाल के लिए वी आर स्टॉपिंग ओनली हियर, बट देयर इज नो बाउंडेशन. आपने कितने चक्कर काटे, 2 चक्कर काटे, आप 10 काटो, 25 काटो, लाख काटो, 10 लाख काटो, any infinite number, lakhs, 10 lakhs, crores, go on rotating. So the degree will go on increasing. In previous table we have seen that the trigonometric functions were up to 90, but you can see now 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree, 450 degree, 540 degree, 630, 720, so on. There is no boundation about the degree. Now how to find the values? ये तो हमने देख लिया कि डिग्री मिलेगी, तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखने की है. वो क्या है कि यो एक्स एक्सिस आप कभी भी लिखते हो तो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो एक्स के लिए क्या लिखने का है आपको, कॉस लिखने का है, और वाई के लिए क्या लिखने का है आपको, साइन लिखने का है. वाई के लिए क्या लिखने का है, साइन लिखने का है. ठीक है, तो फिर से हम यूनिट सर्कल बनाएंगे. नाउ दिस टू कंसिडर दिस टू फॉर द रेफरेंस. अगेन आई एम ड्रॉइंग द यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल, डू यू रिमेंबर, सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस 1. ये 1 है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, बट द वाई ऑन एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इज 0. व्हेन यू आर गोइंग टू द नेगेटिव साइड, यहाँ पे यहाँ कितना है, डिस्टेंस तो 1 ही है, बट यू आर मूविंग ऑन द नेगेटिव साइड, सो इट इज -1 0. सिमिलरली दिस इज योर विच एक्सिस, वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में ये दिस द रेडियस इज 1, तो x को 0 लिखने का है, y को 1 लिखने का है. व्हेन आई एम टेकिंग दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 यूनिट, बट ऑन विच साइड, ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, तो क्या हो जाएगा 0 -1. सो क्लियर विद दिस वैल्यू, a डैश, b एंड b डैश. कैसे किया,
ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, इस साइड आएगा तो +1, इस साइड आएगा तो -1. ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट उल्टा होता है, ग्राफ में यू गेट ऑलवेज द क्रॉस रिलेशन. ऑन वाई एक्सिस एक्स 0 रहेगा और हमेशा एक्स पहले लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है. हाउ यू विल रिमेंबर, एबीसीडी हमने पढ़ा है ना, तो द लास्ट एक्स वाई जेड, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है. तो 0 पहले एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ऊपर की साइड पॉजिटिव साइड इसलिए +1, नेगेटिव साइड तो -1. नाउ लेट अस प्रोसीड विद, आपको एक्स को किसको याद करने के लिए बोला था, एक्स इज रिलेटेड टू विच वन, कॉस थीटा, और वाई किसके साथ रिलेट किया था हमने, साइन थीटा. ठीक है, अब हम घूमना शुरू करेंगे. यहां से घूमे तो यहां से घूमे, यहाँ पे एक यहां से आए तो 90 डिग्री पे आ गए आप. ऑन 90 डिग्री वी आर ऑन दिस लोकेशन. अब इसमें अगर मैं कॉस बोलूंगी तो आपको क्या देखने का है, एक्स देखने का है, और मैं साइन बोलूंगी तो आपको क्या देखने का है, वाई देखने का है. वी हैव टेकन 90 डिग्री रोटेशन. कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0. साइन की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन बोलते हैं हम, वाई देखते हैं, साइन की वैल्यू क्या होगी आपकी 1. यू कैन क्रॉस चेक इन योर टेबल. हम यहाँ पे रुक गए थे 10th स्टैंडर्ड में क्योंकि 90 के आगे वैल्यू नहीं थी. नाउ वी आर प्रोसीडिंग. 90 के बाद में कितना आया था आपका, 180 आया था. सो दिस इज द 180 डिग्री. ओके, नाउ वी आर ऑन टू 180 डिग्री. ओके, नाउ व्हाट इज योर कॉस. कॉस के लिए क्या देखने का है आपको, एक्स देखने का है. सो आई विल राइट डाउन कॉस 180. मैंने बोला 180, तो सबसे पहले लोकेट किया, आप कहां पे आए, 180 पे आ गए घूम के. कॉस बोलेंगे तो एक्स देखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, -1. हम बोलेंगे साइन, फॉर साइन यू विल सी 0. तो इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज साइन 180, तो उसका आंसर क्या होगा, 0. ओके, नाउ आई एम टेकिंग 270 रोटेशन. 270 कहां से घूम के कहां तक आएगा, यहां से घूम के यहां पे गए तो 90, 90 से और घूमा तो 180, 180 से और घूमेंगे 270, हम लोग यहाँ पे है. यू कैन सी दिस लोकेशन. सो इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज कॉस 270, तो 270 आपने लोकेट कर दिया कि आप यहां पे हो. उसके बाद में मैंने पूछा कॉस, कॉस मीन्स एक्स, तो कितना हो गया आपका 0. और साइन पूछा आपको 270, तो सबसे पहले तो आपने 270, आई एम हियर ओनली. द वैल्यू ऑफ साइन, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ वाई इज -1. See, you are having cos 180, sin 180, cos 270, sin 270, which was possible by your 10th standard table? No. So we are going much in depth. Similarly, we can proceed. If I will ask you cos 360, very good. What is the answer? You have to tell. Now look at this answer. 360 means we are on to here. What is the answer? Cos 360. So cos 360 is again 1. And what is sin 360? Sin 360 is 0. So trigonometry is very simple topic, but the very thorough basic understanding is required. Much in depth, we'll slowly and gradually go in much in depth so that it will be useful for you if you take A group, that is maths, and even if you take B group, then in physics, these simple convergence angles are required. So the next topic we'll take up in the next video.